News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक. Money Matters. Hello, good afternoon and welcome to Money Matters, our daily show on all things to do with personal finance. You're listening to Money Matters on the official All India Radio News YouTube channel. This is an interactive show where you can also participate. You can do that simply by typing your comments in the live chat section. Yes, you heard that right. This is the only show on radio where you can just type your comments and instantly get connected with us. Or you can send us an email on moneymatters.air@gmail.com. We announce the topic of the show one day in advance so that you can send in your questions in advance. So as announced earlier, our topic for today is Common Man's Guide to Understand the Budget. I'm Veeravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Ambarish Saxena. नमस्कार, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं। आज का विषय है बजट को समझने के लिए साधारण व्यक्ति की कुंजी। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं। प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड A.K. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। So AKB, let me start by asking you to explain very simply what is the budget, because when we look at budget at a home or a residence kind of a thing, I say I earn 30,000, I spend 27,000. So what is the union budget which we are so fascinated about in simple terms? Well, I think you hit the nail on its head. Union budget is no different from a householder's budget. And let me say that what happens in the union budget is also happening in a householder's budget. For example, the householder's budget has something called income streams. Now, there are various income streams. He may have some regular income from his salary. He may have some regular income from his property. He may have some income from share market deals. Or he may have some income from his savings interest rates. So similarly, the government of India has got various income streams, and the government of India decides that it has got two kinds of streams of revenue, which is called capital revenues, and the other is the revenue as such. So in the capital receipts, what is there is something called when you are taking loans, that is a capital receipt, and when you are getting money by selling your assets, it is capital receipts. But when you are actually collecting taxes, which is your revenue receipt. Similarly, like the householder, if we are getting it from a house property because it is an asset from which you are getting your money, it will be a capital receipt, and householder's income, monthly income, will be the revenue receipt. Come to the expenditure, the government follows the same principle, something called capital expenditure, which is largely investing in areas which give them returns. For example, when the government sets up a factory and the factory gives them annual return by way of dividend or profit, then it's called a capital expenditure. But there are also a large number of revenue expenditure which does not give them an annual return, but it is necessary for the government to keep its business going. Just as a householder wants to keep its business going, it wants to buy grocery, it wants to buy household items, but it wants to invest in a house or acquiring a house, that will be a capital expenditure for the householder. So similarly, the union government has got a clear division of capital expenditure and revenue expenditure, and capital receipts and revenue receipts. So what is the total income of the union government right now? Right now, if you look at the total income of the government, if you look at the 2019-20 year,
the income can be divided in two categories, as I said. One is the revenue receipt, other is the capital receipt. Now, the revenue receipt is something around 19 trillion rupees. Trillion is 1 lakh crore. So 19 lakh crore rupees. Take another 1 lakh crore of capital receipts, which is not creating debt, but it is a capital receipt. So that takes you to around 1 lakh crore. Then there is another 1 lakh crore is coming from by way of non-tax revenues, which is fees, college fees, school fees, government service fees. So these are all called non-tax revenues, or dividends, or so these are non-tax revenues. So that takes another 1 lakh. So it comes to 21 lakh crore. Now you will be wondering that if the government's expenditure liability is around 27.8 lakh crore, now how does it meet the rest? Now what it does is, government goes out in the market, asks its central bank, the Reserve Bank of India, to borrow on its behalf. And the gap between this 28 lakh and this 21 lakh is 7.5 lakh crore. That's called the deficit. That is called the fiscal deficit. Because that is how the government meets its expenditure. Now, if a householder were to do the same thing, he will probably be called either depending too much on borrowing or less on borrowing. So depending on the size of his budget, you have to see how much he can borrow. Depending on his income earning ability, he will decide whether the borrowing is right or wrong. Essentially, the budget is how you meet your income and expenditure, how much of it you meet in borrowing. Let me just end here to tell you the extent. If the government's total revenue is, let us say it is 100, out of that, as much as 20 rupees comes from these borrowings. So 20% of the government's total income, including borrowing, is coming from the borrowing it does in the market. So it is so 1/5 of its expenditure are met through borrowings. So that's fairly high. एके भी जैसे आपने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इनकम और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के पार्ट को, बट सपोज जैसे कि अगर इस फाइनेंशियल ईयर में भी हम देखें, जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जितनी भी रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं, वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. सपोज ये गैप अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जैसा आपने बताया कि एक ऑप्शन है कि बारोइंग्स कर सकते हैं, तो क्या कोई ऐसा फार्मूला या ऐसी कोई थ्योरी है कि एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू का जो गैप है, कितने % हम बोरोइंग कर सकते हैं जो हम विद इन लिमिट्स माने, जो ठीक माने कि अर्थव्यवस्था ठीक डायरेक्शन में जा रही है. अगर बोरोइंग्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है तो फिर उसका बजट पर या पूरी इकोनॉमी पे किस तरह का असर पड़ता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. देखिए, हमारे संघीय ढांचे में ऐसा है कि सरकार के ऊपर भी एक नियंत्रण रखने के लिए सरकार के लेजिस्लेचर ने एक कानून का प्रबंधन किया है. उसको हम कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट. उसका 2018 में उसका एक अमेंडमेंट भी हुआ था, संशोधन भी हुआ था. उसके अनुसार सरकार को इस साल में 3.3% जीडीपी के ऊपर अधिक फिस्कल डेफिसिट वो नहीं कर सकती है. और अगले साल यानी 2020-2021 के जो मायने में उसको ये फिस्कल डेफिसिट को, इसका मतलब अपने जो एक्सपेंडिचर और इनकम का जो गैप जो है, उसको 3% के अंदर लाना पड़ेगा जी. ये 3% के अंदर लाने का जो उत्तरदायित्व सरकार के पास है, वो पार्लियामेंट की एक बनी हुई एक कानून के द्वारा दी गई है. अगर इसमें कोई डेविएशन की जरूरत है, जैसे आपने कहा कि अगर मान लीजिए जैसे कि इस साल हमने देखा है कि जो रेवेन्यूज जो है, रेवेन्यूज की जो वृद्धि दर है बहुत कम हो गई है. 18% की वृद्धि दर होने वाली थी, अभी तक सिर्फ 2% हुआ है पहले 8 महीने में. तो इसकी जो गैप बढ़ेगी, इसमें सरकार को ये करना पड़ेगा, पूरी कोशिश लगानी पड़ेगी. इस वक्त सरकार में अगर आप जाएंगे, अगर वित्त मंत्रालय में हम जाएंगे, देखेंगे पूरी तरह कोशिश है किस तरह से रेवेन्यू को ज्यादा बटोरा जाए और किस तरह से एक्सपेंडिचर के ऊपर रोक लगाया जाए. लेकिन सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं, जैसे कारपोरेट टैक्स को रिड्यूस किया, तो उसका इम्पैक्ट तो एडवर्सली रेवेन्यू कलेक्शन पे पड़ना ही था. जरूर पड़ना था, पर सरकार ने क्यों किया ये?
सरकार ने कॉर्पोरेशन टैक्स का कट इसलिए किया क्योंकि सरकार ने देखा कि जो आर्थिक जो गति जो है वो शिथिल हो गई है। वो 4.5% जो पिछले तिमाही में 4.5% आ गई थी। अब नया जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट आया उसमें कह रहे हैं कि इस साल की जो वृद्धि दर है वो 5% होगी। वो करीबन 2008-9 के बाद 7-8 के बाद ये पहली इतनी कम जो वृद्धि दर है। तो इसमें जरा शंका में आकर शंकित होकर सरकार ने यह तय किया कि कॉर्पोरेशन टैक्स को घटाया जाए तो इंडस्ट्री को एक अवसर मिलेगा जिससे कि उस टैक्स को बेनिफिट लेकर वो ज्यादा इन्वेस्ट करे और इन्वेस्ट करने के बाद उनमें सरकार में इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक रिवाइवल हो। उससे मैं समझता हूं कि इस साल तो कोई आपको फायदा उतना नजर नहीं आएगा, पर अगले सालों में इसका बहुत फायदा नजर आएगा। इस साल बल्कि फायदे के बजाय जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल होने की शंका तो जरूर है। AKP, before we get down to the components of the budget, many people wonder how is the budget actually crafted? What is the process? So if you can throw light on the process of the formation of the budget. Sure. There was a time when the union budget used to be presented at 5 p.m. in the evening. That was before 2000. And that was the time that was decided by, it was a British tradition. To coincide with the high tea. Coincide with the high tea in London. Then in 2000, the government decided in its wisdom, and rightly so, that why follow a 5 p.m. deadline, bring it up, and it is now is normally presented at 11 a.m. in the morning. The second change came sometime around 2016 when it was decided that the budget used to be presented on the last day of February for the next financial year. The government decided that if you present the budget on the last day of February, then what happens is the budget for the next year doesn't get passed before the next financial year begins. So now what they did, the government did in 2016 was to advance it to 1st of February so that the entire budget approval exercise is completed before March 31st, which is the end of the current financial year. So that right from the first day of the new financial year, the government machinery can actually get into the business of spending that money. The third element that you need to keep in mind about the budget is that a budget the exercise is started when the finance ministry sends out a circular to all ministries in the government to send them the revised estimates of their expenditure allocations. And it also sends out circulars to its own revenue department to say that what is the likely expectation of your tax revenues and non-tax revenues. So that is the starting point, and that normally starts at around October, November. And then there are consultations that take place. The chief financial advisors of different ministries are called into the finance ministry. And finally what happens is that after consultation with different stakeholders, there is a meeting within the finance ministry and something called a blue book. And the blue book is prepared, and that blue book is done by the budget division in the finance ministry. A quarantine is put in effect wherein nobody can enter the finance ministry, at least some of its departments. And then the usual ceremony of what is called a halwa ceremony, and the halwa is cooked, and that is when the budget documents start getting printed. Finance Ministry has got his own dedicated printing press to maintain secrecy and confidentiality, and that when the budget printing starts, and we understand the budget printing has begun already, and the last document to be printed would be the Finance Minister's speech, and they will normally get completed on the early morning of 1st of February when the budget is presented. So these documents then are kept in the put in the seal envelope. जैसे आपने बताया बजट के प्रेजेंटेशन के बारे में और पूरे प्रोसेस के बारे में, तो जैसे 1 फरवरी को जब फॉर्मल बजट का प्रेजेंटेशन होगा पार्लियामेंट में, उससे पहले सरकार इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करती है. उसके पीछे क्या प्रयोजन है और उसमें किस तरह की चीजों को इंक्लूड करते हैं? जैसे आपने कहा कि वो इकोनॉमिक सर्वे एक प्री बजट इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है. उस प्री बजट इकोनॉमिक सर्वे का महत्व बहुत ज्यादा था एक जमाने में, जब सरकारी जो डेटा, जो नंबर्स पहले इतनी जल्दी नहीं आती थी. आजकल हम देख रहे हैं कि सरकारी जो नंबर्स जो हैं वो हर तिमाही में आ जाती हैं, और जो आईआईपी नंबर बोलिए या जीडीपी नंबर बोलिए, तो इकोनॉमिक सर्वे का तात्पर्य है
AKB will continue the discussion, but after a short break on Money Matters. Welcome back to Money Matters. We'd like to tell you that our topic for tomorrow's Money Matters is trading in stock and index options on the stock markets. So if you have any queries about options tradings, do email them to us at moneymatters.air@gmail.com. Sorry, AKB, I interrupted you when you were talking about economic survey. इकोनॉमिक सर्वे का जो तात्पर्य है कि वो सरकार अपनी जो पिछले साल जैसे इस साल 2018, 19 और 20 में जो प्रधान जो इकोनॉमिक मुद्दे जो आर्थिक मुद्दे आए थे, आर्थिक चैलेंजेस आई थी और आर्थिक लेखा-जोखा जैसे कहते हैं हम, वो पूरी वो पेश करती है। और पिछले कई सालों से हमने देखा है कि इकोनॉमिक सर्वे ना ही सिर्फ अपने सरकारी इकोनॉमिक आउटपुट, एक्सपेंडिचर सारे उसका जो विवरण देती है, पर उसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर नए नए आइडियाज की आलोचना होती है, नए नए स्कीम्स की आलोचना होती है, किस दिशा में हमारी अर्थनीति जा रही है, किस तरह सरकार देख रही है कि अर्थनीति किस दिशा में जा रही है। तो अगर आप देश की अर्थनीति, देश के विभिन्न सेक्टर को समझना चाहेंगे, मैं समझता हूं प्री बजट इकोनॉमी सर्वे एक बहुत मूल्यवान एक डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट की जो डिमांड जो है, मैं आपको कह दूं कि ना ही सिर्फ भारतवर्ष में है, ये डॉक्यूमेंट एक ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसकी सेल्स, जिसकी बिक्री अमेज़न में भी होती है और इनकी बिक्री बहुत ज्यादा है और लोग इसका जो अगर डॉलर का दाम देखेंगे वो काफी ज्यादा है रुपए से। इसका मतलब डिमांड इतना ज्यादा है बाहर देशों में कि भारत इतनी बड़ी अर्थनीति है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसमें सरकार अपनी अर्थनीति को किस तरह देख रही है, उसका अगर कोई अंदेशा लगाना चाहता है तो इकोनॉमिक सर्वे को सबसे पहले पड़ेगा। एक चीज इससे संबंधित और एकेबी में आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी हम फरवरी 2020 में इस बजट को पेश कर रहे हैं, जो प्रोविजंस हैं वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 के लिए है। तो जो 2019 और 20 का जो टोटल पिक्चर है पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो पहले पूरा हो चुका है, तो उसके बारे में भी कुछ इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल्स होती हैं। इकोनॉमिक सर्वे में 2000 जो पिछले साल का है उसी की डिटेल्स होती हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021 में क्या होना चाहिए, क्या होगा, उसमें बहुत नियंत्रित तरह से अपनी टिप्पणियां देता है, क्योंकि बजट एक ऐसा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, ऐसी कोई इंडिकेशन इकोनॉमिक सर्वे में नहीं आती है जो बजट के बारे में लोग को सजाग या सचेतन कर दे। And of course, on the budget day by 1:30, everybody goes to the website indiabudget.gov.in, and there are 13 documents there. Of course, I'll take your inputs on how to understand this budget because we're calling this a guide. So you have the key to budget documents, you have the budget highlights, you have the budget speech, budget at a glance, annual financial statement, finance bill, memorandum, receipt budget, expenditure budget, customs and central excise, macro and economic framework statement, medium-term fiscal policy strategy, and outcome framework. So there are 13 components. So what are those three things? Now people who are listening to this show will go to indiabudget.gov.in on 1st February at 1:30 by the time they upload this. What are those documents they should download and read? Very important question. I think you should not miss the budget speech. Okay. If you have missed listening to the speech of the finance minister, which is normally divided in part A and part B. The part A gives you an idea of what kind of expenditure outlays the finance minister thinks are necessary and what kind of provisioning should be made, what are the new schemes that she thinks that the country must have in the coming year. So those are the government's overall economic philosophy and expenditure priorities. So that part A is very important. Within the same speech, there is something called Part B. Now that good old days used to be very important because all the indirect taxes and direct taxes to come. So those of you who are interested in only taxation proposals but not interested in the circumstances under which the taxes were framed should probably can ignore Part A, but I would recommend that Part A is very important to understand the background in which the perspective in which the finance minister decided to frame her taxation policy. And on a lighter note, most of the shero shairi comes in Part A as well. Absolutely, because it comes with some bouquets and brickbats, some big doses of concession and some additional imposts.
So, and there is a lot of in Parliament there are huge there are approach, there people appreciate. So that's the budget speech you must focus on. The second document you must focus on is budget at a glance, because that is a brief document. It will be easy to handle. You will be able to see the broad numbers. Always remember that the budget at a glance will have 4 or 5 categories. There will be actual number for example, this year will be 2018-19. Then there will be a budget estimate of 1920, and then there will be a 1920 revised estimate, which will show that how close the government has been in meeting its own targets. And then there is the projection for 2020-21. So these are the numbers that you must look at. You must look at how much is going to capital expenditure. You must look at how much is going to revenue expenditure. You must look at how much money is coming from taxations and how much money is coming from non-tax revenues and how much money is coming through borrowings. This is the budget at a glance. One document that gives you a greater idea of what the government's economic philosophy going forward would be for the next 2-3 years is a document called Medium-Term Fiscal Policy and Fiscal Strategy document. That document is very important. You must take a look at it, because that will give you an idea of what may ahead of you in the coming next 2 years. AKB जो कॉमन मैन है, सामान्य आदमी है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टैक्सेशन का प्रोविजन होते हैं. वो देखता है, खासतौर से जो लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं उनके लिए एक चिंता का विषय होता है कि उसका जो स्लैब्स हैं उनमें कोई बदलाव आएगा नहीं आएगा, कुछ कंसेशंस मिलेंगे. तो अगर आप जो टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन हैं इनको कुछ और इस पर जरूर टैक्सेशन रिलेशन के लिए अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके ऊपर टैक्स की कितना अधिक भार आ गया आपके ऊपर, वो आप 2 तरह से देख सकते हैं. एक तो है बजट स्पीच पढ़िए, वो पार्ट बी, जैसे मैंने कहा पार्ट बी को अच्छी तरह देखिए, और फिर पार्ट बी के साथ साथ आप एक डॉक्यूमेंट है, वो है उसे कहते हैं एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम टू द फाइनेंस बिल. उसके अंदर सारे टैक्सेशन प्रोविजन के सारे जो व्याख्याएं दी हुई थी हैं, किस तरह से आपका टैक्स किस जगह बढ़ गया एवं क्यों बढ़ा है. और उस एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम टू द फाइनेंस बिल में एक बढ़िया एक टेबल होता है जो इंडिविजुअल लोग जो हैं उनके टैक्सेशन देखने के लिए उस टेबल में अगर आप जाएंगे वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी और कितनी ज्यादा होगी या कितना कम होगा. और सारे प्रावधान दिए गए हैं विभिन्न तरह के. अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा तो नहीं होगा. तो आप अगर टैक्स के बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे, अपने टैक्स के बारे में, तो मैं मानता हूं कि बजट स्पीच के पार्ट बी को पढ़ने के बाद आप सीधा चले जाइएगा एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम टू द फाइनेंस बिल. उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि आपके ऊपर कितना टैक्स का भार आपको इस बार वहन करना पड़ेगा. So AKB, you made it easier for our listeners. They have to focus on 4 documents: budget speech, budget at a glance, medium-term fiscal policy strategy statement, and if you are interested largely in direct taxes, then the explanatory memorandum is the document that you must read. And I would add one more document if you want to know that has the government been plugging its expenditure or reducing its expenditure which has been leaky. There is a document called expenditure budget document wherein there is a provision for how much money is being spent on subsidies, which a lot of people, economists argue that is very, very badly spent. It is leaky. It is not targeted properly. So therefore you want to see that whether the government is spending more on subsidies or less on subsidies, which means has the government been more prudent or less prudent. You must look at the expenditure document and you will see that how much subsidy is being spent on postal department, how much subsidy is being spent on fertilizer sale, how much subsidy is being spent on petroleum products. Now, of course, there are no subsidies in petrol and diesel, but there are subsidies in many other petroleum products like kerosene. So I think the expenditure document is also becoming important these days. So hopefully after that explanatory session with AKB, most of our listeners would be able to go to indiabudget.gov.in. That's the website on 1:30, 2 o'clock on the day of the budget, and understand this year's budget much better than they understood last year's budget. Well, that's all we have in this edition of Money Matters. If you would like, we'd like to tell you that our topic for tomorrow's Money Matter is trading in stock and index options on the stock market. If you have any queries, you can send it to us at moneymatters.air@gmail.com. Thank you, AKB. Thank you, Ambarish. Thank you. And that's a wrap on this edition of Money Matters. Namaskar.